let's start with chapter number 3, that is Earth changing Earth. So in this chapter we will study about the earth crust, which is in a constant motion vertically and horizontally. The movement has some forces within earth itself, और ये जो मोशन होता है शिफ्टिंग ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट लीडिंग टू जियोलॉजिकल फिनोमेना जैसे फोल्डिंग या फोल्डिंग. राइट, वी हैव कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. फोर्सेस दो तरीके की है, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. एंडो मतलब जो इंटरनल होते हैं, एक्सो मीन्स जो बाहर होते हैं. सो एंडोजेनिक फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिवेटिंग एंड बिल्डिंग अप पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस. इसमें आपका फॉर्मेशन होता है माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यू का. प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बिहाइंड एंडोजेनिक इज जनरेटेड विद इन द अर्थ इटसेल्फ. राइट, देन वी हैव वोल्केनो. इसमें क्या होता है, ओपनिंग होती है, वेंट होती है. यहाँ पे क्या होती है, ओपनिंग, ये वेंट होता है आपका. ठीक है, ये क्या है आपका क्रिएटर है. राइट, सो द लावा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अर्थ इंटीरियर वास्ट चैम्बर ऑफ मॉल्टन रॉक, जिसे हम मैग्मा कहते हैं. जब मॉल्टन मैग्मा सरफेस पे रीच करता है, इट इज रेफर्स टू एज लावा. इट कूल्स डाउन, इट सॉलिडिफाइड इनटू रॉक्स एंड दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम solidification. What is part of volcano? So we have vent, creator and volcanic core. Vent जहाँ से ओपनिंग, लावा बाहर की तरफ निकलता है. क्रिएटर जो टॉप होता है वॉल्केनो का, उसको हम क्रिएटर कहते हैं. फनल शेप होता है. वॉल्केनिक कोन क्या होता है, जहाँ से आपका लावा, डस्ट, एश, रॉक्स बिल्ड्स अप अराउंड द वेल. नाउ अर्थक्वेक. An earthquake refers to the sudden vibration on earth surface caused by movement of lithosphere plate beneath the earth surface. ये जो मूवमेंट होती है, रिलीज एनर्जी विद इन द अर्थ क्रस्ट, इसमें क्या होता है, सेस्मिक वेव रिजल्ट करते हैं. सो द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज सेस्मोलॉजी. सो द एग्जैक्ट पॉइंट विद द अर्थ फ्रॉम वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट, उसको क्या कहते हैं, जहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है उस पार्ट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट, फोकस. और जहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब वो आके अर्थ सरफेस पे लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर. सो टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, सेस्मोलॉजिस्ट यूज इंस्ट्रूमेंट जिसे हम सेस्मोग्राफ कहते हैं, रिचर्स, जिसका जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो 2.0 होता है और लेस इज कंसिडर्ड वीक. और अगर आपका 7 या 7 से ज्यादा होता है तो वो मेजर अर्थक्वेक. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ. सो अर्थ सरफेस इज कांस्टेंट स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन shaped by relentless forces of nature. Two fundamental processes are responsible: weathering and erosion. So weathering, it is a gradual disintegration of rock into smaller fragments, right? Erosion on the other hand involves the removal and transportation of eroded material from one location to another by natural agents like we have water, wind and ice. Now work of a river. River का क्या काम होता है, river play है significant role in shaping earth's surface. As they flow, river exert their influence, wearing down rocks along their paths and transporting loose materials. Some silt कहते हैं. So river deposit the silt near the mouths, forming features like delta. It is divided into 3 sections: upper course, middle course and lower. So in the upper course, rivers cascade down steep mountain slope. जो उसकी velocity होती है और आपकी erosive power होती है वो peak होती है, right? Like we have George, V-shaped valley, waterfall, meander and oxbow, floodplains and natural levees. These are some distinctive landforms that are formed, right? So George क्या होता है, एक narrow steeped valley होती है which is formed by relentless downward cutting. V-shaped high mountains create V-shaped valley. Waterfall, when water plumbs vertically from considerable height. Now meander, river flows are winding path forming large bends. ठीक है, इससे क्या होता है, S-shaped हो जाता है. फ्लड प्लेन्स, जहाँ पे रिवर बैंक्स क्रिएट करे जाते हैं. देन नेचुरल लेवीज, हायर देन द सराउंडिंग, जो प्लेन होता है उससे थोड़ा हायर होता है, राइट? डेल्टा, वी हैव एज अ रिवर विच इज एन अल्टीमेट डेस्टिनेशन, सी और ओशन. इट डिपॉजिट ऑल इज कैरिड मटेरियल इन द माउथ. इससे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, हम ब्रांचेस ऑफ रिवर कहते हैं, वो आपके मिल जाते हैं. नेक्स्ट इज वीक और सी वेव्स. वर्क ऑफ सी वेव्स. सी वेव्स का क्या वर्क होता है? सो द सीजलेस मोशन ऑफ सी वेव्स wield significant influence on our planet coastal region. These waves, propelled by the nature forces, relentlessly they strike the shore, carving the mark, erosion and deposition. Right? So let's study about the sea cliff. ये एक formidable site along the coast, and the sea cliff emerges as a steep rocky slope created by the relentless force of wave at its base. Now sea cave, unyielding power of sea waves causes weakness in rock formation.
right? These cracks expand, forming hollow spaces that evolve in sea caves, and these formations primarily manifest in the soft rock structure. Now sea or marine arches. When opposing waves manage to carve through sea caves from opposite direction, a bridge-like features emerge, जिसे हम marine arc कहते हैं. Stack क्या होता है? It is a sea arc that undergo further erosion from careless waves. Now blowhole क्या होता है? It is cavity that forms the ceiling of a sea cave, empty named blowhole. Beaches क्या होता है? It is a shoreline. The sea wave deposits sediment gradually. और ये क्या फॉर्म करता है? पिक्चर क्यूब एक्सपेंसेस, जिनको हम क्या कहते हैं? बीचेस कहते हैं. नेक्स्ट इज वर्क ऑफ आइस. आइस इज अ फॉर्मिडेबल फोर्स ऑफ स्किन of water and air. Also possesses power to erode and deposit material. Right? Their erosive impact is substantial owing to the friction generated by their immense mass. जो भी friction create होता है उनके mass से. So what happened? The mineral that is extracted from the land by glacier is insorted and angled. Like we have lakes, U-shaped valley और glacial moraines. Lakes क्या होते हैं? They carve deep holes in the rock floor. Eventually क्या होता है? Melting of ice results in the formation of pristine lake. भाई ice melt कर रही है, जब melt करे तो पानी बन रहा है, उससे क्या बन रहा है? Lake बन रहा है. U-shaped valley, it is glacier advanced carving into expensive U-shaped formation. ठीक है, यहाँ ये boulders होते हैं. Now glacial moraines, the glacier transport unsorted materials, rock, blotter and sediments. ठीक है, ये डिपॉजिट होते हैं along the glacier path. Now work of wind. Wind का क्या काम होता है? So wind exerts a dominance and agent of erosion. Deposit in arid desert landscape. These dry and barren expanses wind wings away the soil particles. Right? Then we have mushroom rock. When the rock is exposed to wind, friction causes erosion. जिससे क्या होता है? ग्राउंड सरफेस पे आप देखेंगे एक डिस्टिंक्ट ऐसे मशरूम शेप फॉर्मेशन होता है. आप अरबिया में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा. Sand dunes. These are the prominent wind. ये desert area में देखने को मिलती है. Right? They are materialized when the wind encounters obstacle in the path. So, like we have plants, bushes, boulders, and remains of decades of animals. Right? This is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in next class. Thank you.